Hello, good morning friends. Myself Jatin from Asanta School and welcome all of you once again. We are going to continue chapter 8 quadrilateral, and you know very well that today we are explaining properties of the parallelogram. Now continue theorem number 8.4. In a parallelogram, opposite angles are equal. In a parallelogram, opposite angles are equal. So here given ABCD is a parallelogram, and to prove is angle B congruent to angle B and angle A congruent to angle C. Dear friends, जैसे कि हमने आपको बेसिकली प्रीवियस वीडियो में बताया 8.1 थ्योरम्स की प्रूफ, इसी प्रूफ को लेकर आगे चल सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि हमें दिया गया है कि ABCD पैरेललोग्राम है और AC इज द डायगोनल एंड दैट्स व्हाई AC इज डिवाइडेड पैरेललोग्राम इनटू टू congruent triangle. So here triangle ABC congruent to triangle CDA. Therefore the remaining corresponding parts of the congruent triangle is also congruent, and therefore we can write here angle B is congruent to angle D and angle A is congruent to angle D with the reference of the diagonal B. Similarly, तो इस तरह से congruent angles equal angles भी होते हैं measures के हिसाब से. So therefore we can prove that angle B equal to angle D and angle A equal to angle C. Let's go. Theorem 8.5. If a quadrilateral, each pair of opposite angle is equal, then it is a parallelogram. Then it is a parallelogram. ठीक है, इसी तरह से जो हमने theorem 8.4 देखा, parallelogram का जो हमारे पास है quadrilateral, तो इसके बेस पर हम अपोजिट एंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं. इसका कन्वर्स थ्योरम है 8.5 है, वो इसका कन्वर्स थ्योरम है, जिसमें हमें क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है और ईच पेयर ऑफ द एंगल्स इज इक्वल, ये हमें गिवन में दिया है. दैट मीन्स एंगल बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल डी, एंगल ए इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी, एंड देन वी प्रूव पैरेललोग्राम. तो इस हिसाब से हमें इसे प्रूव करना होगा कि, लेकिन हम आपको बता दें कि 8.1 थ्योरम के बाद जितने भी थ्योरम्स आपके सामने रख रहे हैं, ये सिर्फ आपके एक्सप्लेनिंग के लिए, आपके नॉलेज के लिए है. इसकी कोई प्रूफ आपको रेडी नहीं करनी है. नाउ देयर इज येट अनदर प्रॉपर्टी ऑफ द पैरेललोग्राम. लेट्स स्टडी द सेम. Draw a parallelogram ABCD and draw both the diagonals intersecting each other at point O. Look at theorem number 8.6 on the blackboard and see the figure. Here theorem 8.6 says a diagonal of a parallelogram bisect each other. तो हम डिस्कस करने जा रहे हैं the diagonals of the parallelogram bisect each other. इस बात की, so draw a parallelogram ABCD and draw both the diagonals intersecting at point O and measure the length of OA, OB, OC and OD by practically, and we will observe that OA is equal to OC and OB is also equal to OD. That means O is the midpoint of both the diagonals, and therefore we can say that each time we will find that O is the midpoint of both the diagonals. We repeat this practicals in some more parallelogram, different type of parallelogram, and then we can prove that theorem 8.6 says is true. That means the diagonals of parallelogram bisect each other. Now, what would happen if a quadrilateral, the diagonal bisect each other? Will it be parallelogram? मतलब कि जो 8.6 थ्योरम में हमने बात की, द डायगोनल्स ऑफ द पैरेललोग्राम इज बाइसेक्ट ईच अदर, क्या इसका कन्वर्स सही है?
If the diagonals of the quadrilateral is bisect each other, then it is a parallelogram. तो हाँ, ये पॉसिबल है. किस तरह से? This result is converse of result of theorem number 8.6. और इस तरह से हम इसे प्रूफ भी कर सकते हैं. किस तरह से? तो सबसे पहले फिर से एक बार आपको 8.6 फिगर को ध्यान रखना है. OA here, OA is equal to OC and OB is equal to OD. So in triangle AOB congruent to triangle COD, in triangle COD. Why? Because corresponding part of the angles are congruent. Here OA is congruent to OC, OD is congruent to OB, and angle AOB congruent to angle DOC, because the vertically opposite angles, pair of vertically opposite angles, and therefore both the triangles are congruent, and therefore triangles are congruent, then other correspondence of the triangles is also congruent, and therefore by the simplicity we can say that ABO is also congruent to CDO, angle ABO is also congruent to angle CDO, and from this we get AB is parallel to CD, and similarly AC is also parallel to AD, and therefore we can say that ABCD is a parallelogram. तो किस तरह से 8.7 थ्योरम्स को प्रूव किया जा सकता है, या किस तरह से 8.7 थ्योरम्स की जो प्रूफ थी, स्टेटमेंट था, इसे हम प्रूव कर सकते हैं, ये इसका हमने आपको एक्सप्लेनेशन दिखाया. So theorem 8.6 says that if a diagonals of the quadrilateral bisect each other, then it is a parallelogram. Okay, अब हम आगे चलते हैं और बात करेंगे हम another condition for the quadrilateral to be the parallelogram. Dear students, you have studied many properties of the parallelogram in each chapter, and you have also verified that if a quadrilateral, any one of those properties is satisfied, then it becomes the parallelogram. Now we study yet another condition, which is the least required condition for the quadrilateral to be the parallelogram. So it is stated in the form of the theorem 8.8 says a quadrilateral is a parallelogram if a pair of opposite sides is equal and parallel. A quadrilateral is a parallelogram if a pair of opposite sides is equal and parallel. Look here the figure, parallelogram ABCD. AB is equal to CD. AB is equal to CD is the opposite sides of the parallelogram. And also AB is parallel to CD. AB is parallel to CD. So let's draw the diagonal AC. Therefore AB is parallel to CD and diagonal AC is the transversal of it. So therefore here triangle ABC and triangle CDA, triangle ABC and triangle CDA, AB is congruent to CD. Angle BAC congruent to angle DCA, and AC is equal to AC is the common line segment. So therefore SAS rules, we prove that triangle ABC is congruent to triangle CBA, and therefore by the given two congruent triangles, the corresponding part of the triangle is also congruent. Therefore we can write here BC is congruent to AD, and also we prove that BC is parallel to AD by using the another pair of alternative angles. So इस तरह से हम इस प्रॉपर्टीज के द्वारा भी, इस कंडीशन के द्वारा भी जो हमें क्वाड्रिलेटरल दिया गया है उस क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम कर सकते हैं. तो आज के इस वीडियो में हमने कुछ थ्योरम स्टेटमेंट लिए और उस स्टेटमेंट के द्वारा आप किस तरह से इस पैरेललोग्राम को कर सकते हैं ये बात करी. आज के दोनों वीडियो हमारे प्रॉपर्टीज ऑफ द पैरेललोग्राम को लेकर थे. फिर से एक बार
सारी प्रॉपर्टीज याद करा दें जिससे हम क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम कंसिडर कर सकते हैं। सबसे पहले थ्योरम 8.1, डायगोनल्स ऑफ द पैरेललोग्राम डिवाइडेड इनटू टू कॉन्ग्रुएंट triangles. Second theorem 8.2 says that in a parallelogram opposite sides are equal. Theorem 8.3 says if each pair of the opposite sides of the quadrilateral is equal, then it is a parallelogram. Theorem 8.4 says in a parallelogram opposite angles are congruent, and theorem 5 is the converse of the theorem 8.4. It says if the quadrilateral each pair of opposite angles is equal, then it is a parallelogram. Theorem 8.6 says the diagonal of the parallelogram bisecting each other, then theorem 8.7 is the converse of theorem 8.6, which it says if the diagonals of the quadrilateral bisect each other, then it is a parallelogram. Last one, theorem 8.8 is the another condition for the quadrilateral to be the parallelogram. It says a quadrilateral is a parallelogram if a pair of opposite side is equal and parallel. तो ये था हमारा वीडियो प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम को लेकर। आज के वीडियो में यहाँ तक। आई होप सो यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। आपने इम्पोर्टेंट 8.1 थियरम गिवन टू प्रूव और प्रूफ के साथ अच्छी तरह से नोट डाउन कर लिया होगा। साथ में जो हमने डिफरेंट स्टेटमेंट्स आपके सामने एक्सप्लेनिंग किए 8.2 थियरम से लेकर 8.8 थियरम तक, ये अच्छी तरह से समझने की कोशिश की होगी। ये स्टेटमेंट आपके सिलेबस के हिसाब से हमने आपको एक्सप्लेन किए हैं। इस उम्मीद के साथ आपने पूरी तरह से ये दोनों वीडियो को अच्छी तरह से समझा होगा, सुना होगा और नोट डाउन किया होगा। इस उम्मीद के साथ आपका धन्यवाद करते हुए थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय।